Namaskar everyone. No, no, I am going to start this class. So, name of the chapter is linear inequalities. This is the fifth chapter of mathematics in class 11. So, this is one of the most important chapter. Not only CBSE as well as a state together with JEE main and advanced ask question from this chapter. So, this is the significance of the chapter according to the school examination, according to the board examination, and according to the entrance examination. Entrance examination, it means that JEE main or JEE advance. JEE main, advanced, CBSE board, ICSE board, all state board in India, ask question from this chapter. Now I am going to clear the concept of inequalities. Let's try to understand what is the inequalities. For inequalities, it is saying that any mathematical statement having or involving these four signs, any mathematical statement having or involving these four signs or the following signs is known as the inequalities. So, any mathematical statements involving or having these signs. So, this sign is also known as the less than. This sign is also known as the greater than. This sign is also known as less than or equal to. This sign is also known as greater than or equal to. So it means that any mathematical statements involving having the following or above signs is known as inequalities. So hope that there is no problem to understand what is the inequalities. Once again,
I am going to repeat any mathematical statements involving or having less than, greater than, less than, or equal to, greater than, or equal to is known as inequalities. Let's try to know types of inequalities. As per the syllabus of CBSE board for class 11 or all state boards of India, basically we study about two types of the inequalities. First one is known as the numerical inequalities. Second one is known as the literal inequalities. So try to understand with the help of the example what is the numerical inequalities. For this we take this example. Three greater than two, three less than five. So these are known as the numerical inequalities. When we start to compare two numbers, then we get the following types of the comparison: equal, less than, or greater than. Any one of these three. But in case of inequalities, we get only less than or greater than. When two numbers are equal or mathematical statement having or involving this sign or equal sign, name of this sign is equal sign, is known as the equation. Is known as the equation. About equation already we have studied in our earlier classes. In class 10, in class 9. At present we are in class 11. So these signs less than or equal to or less than or greater than is used in numerical inequalities. In numerical inequalities only we use less than or greater than. So two numbers can be either greater than or less than. We have no problem to say about two numbers which is greater or which is smaller if we have proper idea about number line. So let's see the number line.
So this is a line. In the number line we have 0 and we divide entire number line into two parts with respect to 0. One part is right of 0 and other part is left of 0. This is the right of 0 and this is the left of 0. Right of 0 consists of natural number as well as positive integers. Both are same. Positive integer and natural number are the same. But in the left hand side, in the number line, we have negative integer. Number line said that the position of any number is greater or smaller with respect to number present either in the left hand side or right hand side. For this, to better understand, we take a number in the number line. This is the 5. Suppose this is the 4 and so on, 3, 2, 1, 0, and this one will be -1, -2 up to infinitive. Up to infinitive. This is the negative infinitive and this is the positive infinitive. So if we consider about 5, position of 5 in the number line, then the number which are lies in the left hand side of the 5 are the smaller, and the number which are lies in the right hand side are the greater. So half that there is no problem to understand to say a smaller or greater with the help of the number line. So number line plays a crucial role to compare two numbers. So if we see here 3 is greater than 2, it means that 3 is in the right hand side of 2 in the number line. If 3 is less than 5, it means that 3 is in the left hand side of 5. So half that there is no problem to understand the comparison of two numbers with the help of number line. So literal inequalities, numerical inequalities consist of only two signs, less than or greater than. Let's try to clear literal inequalities. Let's see what is the literal inequalities. For this we discuss about this one. Ax plus b greater than c. Here a, b, c are the real numbers and a not equal to 0.
If A will be 0, then this one will be numerical inequalities. So here x is the variable. In other words, this is an algebraic expression. When an algebraic expression having greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, then this one is known as the literal inequalities. So we write down any algebraic expression involving having so hope that there is no problem to understand literal inequalities. Any once again I am going to repeat the statement which is used to understand or identify literal inequalities. Any algebraic expression having involving algebraic expression is known as literal inequalities. Or we write down here less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to. Any algebraic expression having involving less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to is known as literal inequalities. So hope that there is no problem to understand what is the literal inequalities. As per the using sign types of inequalities. As per using sign types of inequalities.
This is the greater than, this is the less than, greater than or equal to, less than or equal to. So ax plus b greater than c, ax plus b less than c, ax plus b greater than or equal to c, ax plus b less than or equal to c. First two, when we use greater than or less than in any mathematical or numerical inequalities or literal inequalities is known as the strict inequalities. A strict inequalities. It means that if anybody asks us what do you mean by strict inequalities, then any inequalities having greater than or less than sign is known as the strict inequalities. Any inequalities having greater than, equal to, less than, equal to, so we have no problem to understand a strict inequalities. It means that a strict inequalities involving greater than or less than sign, or any inequalities involving greater than, equal to, less than, equal to is known as the slack inequalities. So hope that there is no problem. Sorry for interruption. Sometime audio is not audible. So we have, as per the involving or using sign, we have
especially two types of the inequalities. First one is known as the strict inequalities. Second one is known as the slack inequalities. As well as we have one more type which is known as double inequalities. So let's see the double inequalities. X greater than 3 but less than 10. This is a kind of an example of double inequalities. So we have the following types of the inequalities: numerical inequalities, literal inequalities, strict inequalities, slack inequalities, double inequalities. Now we try to understand linear inequalities. Suppose that if we consider about this one, ax plus b greater than c. This is the variable. We see the power of the variable. Here x is the variable. We see the power of the variable. What is the power of the variable? Power of the variable clear the linear inequalities. So if we see the power of x is 1. When the power of the variable is 1, then we say that this is a linear inequality. When the power of the variable is 2, then we say this is a quadratic inequality. When the power of the variable is 3, then we say this is the cubic inequalities, and so on. Linear, quadratic, cubic, and so on. These inequalities have one variable, therefore this is a linear inequalities with one variable. When the inequalities has two variables, then we say that inequalities with two variables. Suppose that if we consider about this one, ax plus by less than c, then we say that this is an inequality. Here variables are x and y. The power of the variable is 1. Here the power of the variable is 1. So this inequality is known as
inequalities with two variables and the power is 1, so we say that linear inequalities with two variables. Linear inequalities with two variables. So hope that there is no problem to understand linear inequalities. Linear inequalities, it means that inequalities, the power of the variable is 1, is known as the linear inequalities. Let's see some more basic concept which will help during the solution of exercise problem. Suppose that we take a linear inequalities ax plus b greater than c. When both sides multiplied by any number, then there is no change in the used sign of the inequalities. Suppose that both sides multiplied by 5, then there is no change in the used sign of the inequalities. When both sides multiplied by minus 5, then reserve the sign of the used inequalities. It means that here is the greater than, then here will be less than. Always keep in mind this technique will be used during the solution of exercise problem. If ax plus b greater than c, if we add or subtract same number both sides, then there is no change in the used inequalities. It means that if we add ax plus b, add or subtract plus minus 5 both sides, then there is no change in the sign of used inequalities. We write down c plus minus 5. When we divided both sides by the same number, then there is no change in the used inequalities. Ax plus b divided by 5, and this is the inequalities ax plus b greater than c. When both sides divided by same number, then there is no change in the used inequalities. So hope that there is no problem to understand all of the details which I have discussed in this class. तो नमस्कार, मैं हूं आनंद। अब हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी होंगे या वैसे विद्यार्थी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग करने से समझते हैं, उनके लिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं या रिकैप कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग इनइक्वालिटीज के बारे में स्टडी कर रहे थे कि भाई इनइक्वालिटीज होता क्या है। तो बोला जाता है इनइक्वालिटीज के बारे में कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये जो साइन आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, या नेम ऑफ द साइन है आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर इस तरह का साइन किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आपको मिल जाता है,
तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप बोलना शुरू कर दीजिए, यही है आपका इनइक्वालिटीज। अभी हम लीनियर इनइक्वालिटीज को क्लियर नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इनइक्वालिटीज को क्लियर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं इसको, अगर आप शुरू से क्लास में होंगे तो ऑलरेडी मैं इसको प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में भी बताने का प्रयास किया। एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग हैविंग, अगर ये साइन है तो आप उसको इनइक्वालिटीज बोल दीजिए। अगर यदि अ, तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, को एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ होगा इनइक्वालिटीज को समझने में। अब बोलता है कि टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, बोलता है कि इनइक्वालिटीज अभी यहाँ पर दो तरह से, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज और लिटरल इनइक्वालिटीज। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज इट मीन्स दैट हम लोग कंसिडर करते हैं नंबर पर, टू नंबर पर। जब टू नंबर पर हम लोग कंपैरिजन करना शुरू करते हैं तो या तो नंबर ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। तो इट मीन्स दैट एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जहाँ पर अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और नंबर्ड है, तो आप उसको डायरेक्ट बोल दीजिए कि ये जो है आपका न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है। टू नंबर्स यदि इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। इसका भी कंसेप्ट आपको जब ये क्लास कर रहे थे तो आपको क्लियर किए थे। तो इट मीन्स दैट देखिए, ये क्या है ग्रेटर देन और ये क्या है लेस देन। ग्रेटर देन और लेस देन का साइन का यूज होता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज में। अगर आप न्यूमेरिकली इनइक्वालिटीज करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे, तो आपको दो ही चीज मिलेगा, ग्रेटर देन या लेस देन। अगर इक्वल टू मिलता है तो इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम लिटरल इनइक्वालिटीज के बारे में कंसिडर करते हैं, तो लिटरल इनइक्वालिटीज में बोला जाता है कि ग्रेटर देन भी मिलेगा, लेस देन भी मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी मिलेगा और लेस देन इक्वल टू भी मिलेगा। या फिर वैसा इनइक्वालिटीज जहां पर कोई वेरिएबल प्रेजेंट हो। अगर यहाँ पर कंसिडर करते हैं ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पर एक्स जो है वेरिएबल है। अगर वेरिएबल हो तो फिर हम उसको बोलेंगे लिटरल इनइक्वालिटीज। लिटरल इनइक्वालिटीज को फिर देखिए कितने पार्टों में बांट दिया गया है। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लिटरल इनइक्वालिटीज के बारे में हम ये भी बोल सकते हैं, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग इन्वॉल्विंग लेस देन ग्रेटर देन less than equal to greater than equal to is known as the literal inequality। as per यूजिंग साइन टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज आपका देखिए हो जाएगा। ये देखिए क्या है, एक लिटरल इनइक्वालिटीज है और यहाँ पर कौन सा साइन का यूज किया गया है, ग्रेटर देन का। अगर ग्रेटर देन और लेस देन का यूज होता है तो आप सीधे बोल दीजिए ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है एज पर द यूजिंग साइन। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का यूज कर दिया गया है तो आप सीधे बोल दीजिए स्लैक इनइक्वालिटीज है। अगर किसी चीज को बीच में रख करके दो नंबर से कंपैरिजन कर दिया गया है तो इट मीन्स दैट ये डबल इनइक्वालिटीज है। जब आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज का जरूरत पड़ेगा। लीनियर इनइक्वालिटीज इट मीन्स दैट जो वेरिएबल यूज होता है उस वेरिएबल का पावर यदि 1 हो। अगर किसी अलजेब्रिक या लिटरल इनइक्वालिटीज में जो वेरिएबल यूज होता है, अगर वेरिएबल का पावर 1 हो तो हम लोग बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। इट मीन्स दैट वी बिकम सक्सीड टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट इस तरह से क्लियर हो जाता है। अगर 2 होगा तो आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 होगा तो क्यूबिक होगा, इसी तरह से अगर nth होगा तो nth आपका हो जाएगा, nth इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर देखिए अगर दो वेरिएबल का यूज किया गया है और वेरिएबल का पावर देखिए यहाँ 1 है, तो इट मीन्स दैट आपका लीनियर इनइक्वालिटीज विथ टू वेरिएबल्स हो गया। अब यहाँ पर कोई इनइक्वालिटीज को ले लिए हैं, अगर इनइक्वालिटीज के बाद साइड में अगर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाइड कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं तो जो इनइक्वालिटीज का जो साइन यूज किया गया है, यहाँ देख रहे होंगे हैंड जो मूव कर रहा है, वो साइन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर यदि आप माइनस से मल्टीप्लाइड कर देते हैं
तो वहां पर साइन जो है रिजर्व हो जाता है, मतलब देखिए यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ लेस देन हो गया। डिवीजन में भी वही केस है। तो होप दैट अब आप जो है रेडी हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, फिर बाद में जब क्लास लगाऊंगा तो बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो देखिए ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक आपके यहाँ दिख रहा होगा। सॉल्व 24x लेस देन 100। अगर हम इस पर एनालिसिस करें व्हाट इज द 24x लेस देन 100, तो ये एक प्रकार का लिटरल इनइक्वालिटीज है। ये एक प्रकार का लीनियर इनइक्वालिटीज है। ये एक प्रकार का स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। चूंकि लेस देन या ग्रेटर देन का जहां पर यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है किसी भी साइड में, आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो हम उसको बोल देते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज, क्योंकि यहाँ पर जो है दो नंबर पर कंपैरिजन नहीं किया गया है। अगर दो नंबर पर कंपैरिजन किया जाता 24 और 100 पर, देन दिस इज द न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज हो जाता। So hope that there is no problem to identify the given inequalities in question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो inequalities दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। Once again I am going to repeat, एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। जब दो नंबर पर कंपैरिजन किया जाता है तो हम लोग बोलता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। लेकिन यदि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंपैरिजन किया जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल का यूज किया गया है, अगर उस वेरिएबल का पावर 1 होता है तो हम लोग बोल देते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। जितना वेरिएबल आएगा, यहाँ एक ही वेरिएबल है, ओनली एक्स है, तो इट मीन्स दैट लीनियर इनइक्वालिटीज विथ वन वेरिएबल होगा। अगर दो वेरिएबल आ जाता, y भी रहता, तो लीनियर इनइक्वालिटीज विथ टू वेरिएबल्स एंड सो ऑन। तो ठीक है, क्वेश्चन काफी डिटेल्स कर दिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ सॉल्व करने के लिए बोल रहा है इस इनइक्वालिटीज को, बोलता है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर। इट मीन्स दैट वी हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट नेचुरल नंबर एज वेल एज इंटीजर, और वी हैव लर्न इन आवर अर्लियर क्लासेस अबाउट नेचुरल नंबर एंड इंटीजर। अर्लियर क्लासेस में हम लोग बिल्कुल नेचुरल नंबर और इंटीजर के बारे में स्टडी कर चुका है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। एक्सरसाइज 5.1 है आपका। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 24x। देख लीजिए लेस देन है कि ग्रेटर देन है, तो लेस देन है। 24x लेस देन आपका 100 है। चलिए पहला नेचुरल नंबर के लिए इसको सॉल्व कर देते हैं। नेचुरल नंबर, लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन को हम लोग शुरू करते हैं। ट्वेंटी फोर एक्स लेस देन 100। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नॉट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 24। 24 से बोथ साइड हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा देख लीजिए, 24x बाय 24 लेस देन 100 बाय 24। 24 कैंसल्ड आउट कर देते हैं, तो इट मीन्स दैट x लेस देन, यहाँ भी कैंसल आउट करते हैं तो 4 से कैंसल आउट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 25/6।
फिर ये क्या हो जाएगा, तो 4/1/6, x लेस देन 4/1/6। अब इसमें से आपको केवल नेचुरल नंबर लेना है। तो आपका सॉल्यूशन का सेट क्या हो जाएगा, देख लीजिए। सॉल्यूशन सेट, इट मीन्स दैट 4/1/6 का जितना इससे छोटा जितना भी नेचुरल नंबर होगा उसको लिख देना है। तो नंबर लाइन में आएंगे तो इससे छोटा वाला लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे, तो इट मीन्स दैट आपका हो जाएगा 4, आपका हो जाएगा 3, आपका हो जाएगा 2 और आपका हो जाएगा 1। 1 के बाद फिर नेचुरल नंबर नहीं मिलता है। तो इट मीन्स दैट यहाँ से शुरू किए, इसीलिए लिख दिए 4 3 2 1। अगर जनरली इसको हम लिखेंगे कैसे, तो लिख देंगे 1 2 3 एंड 4, all natural numbers less than 4/1/6 both are the same। यहाँ बढ़िया से आप समझ जाइए, इसीलिए इसका यूज कर दिया गया। when, अब दूसरा जो है आपका when x is an integer, x is an integer। जब आपका x इंटीजर होगा तब क्या हो जाएगा, तो सारा चीज यहाँ लिख देंगे। इंटीजर में क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 4 से नीचे वाले सब को लिखेंगे। तो ये 4 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 0 इंटीजर है, फिर -1, इसी तरह से डॉट 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 चलते चलते माइनस इंफिनिटी तक आ जाएगा। इट मीन्स दैट यदि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजमेंट कर देंगे तो यहाँ माइनस इंफिनिटी हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, फिर हम लोग लिख दिए -1, फिर 0, फिर आपका 1, फिर 2, ये आपका 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4 तक चला जाएगा। तो सिमिलरली वी कैन सॉल्व रेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन सॉल्व रेस्ट क्वेश्चंस of this exercise। नो आई एम गोइंग टू अवर दिस क्लास। अब मैं इस क्लास को अवर करने जा रहा हूँ। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।